students, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the new chapter of class 5th science, that is chapter number 13 about light and shadow. Okay, chalo, let's start with it. First of all, the introduction. Most objects we see around us do not produce their own light. We see them because they reflect light that is hitting them from elsewhere. Okay, तो students, ज़्यादातर objects जो आप अपने surrounding में देखते हो, वो सभी objects अपनी खुद की light produce नहीं करते हैं. ठीक है, आप उन्हें देख पा रहे हैं बिकॉज किसी अदर ऑब्जेक्ट की लाइट उसको हिट करती है एंड वो हिट लाइट बाउंस बैक करके हमारी आईज में एंटर करती है एंड देन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल टू अवर आईज. ठीक है, नाउ ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट, अब वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने खुद की लाइट एमिट करते हैं दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल एंड द सन. लेकिन जिन ऑब्जेक्ट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं है दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल बुक, ट्री एंड द मून ऑल्सो. Now student, there are some living things. अब कुछ living things भी ऐसी हैं जो अपनी खुद की लाइट एमिट करती हैं, है ना. एंड इस तरीके की जो लाइट का प्रोडक्शन लिविंग थिंग्स के थ्रू होता है उसे बोला जाता है बायोल्यूमिनेंसिस. फॉर एग्जाम्पल लैंटर्न फिश, फायरफ्लाई, दिस इज फायरफ्लाई, लैंटर्न फिश, दिस इज ग्लो वॉर्म. ठीक है, ये सभी लिविंग बींग्स है और ये अपनी लाइट एमिट कर पाते हैं एंड इस लाइट प्रोडक्शन को कहा जाता है बायोल्यूमिनेंसिस. Now materials and light. तो स्टूडेंट, देयर आर सम मटेरियल्स जो लाइट को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट को पार्शियली ब्लॉक करते हैं एंड कुछ ऐसे हैं जो लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं. ऑलराइट, सो जो मटेरियल्स लाइट को ब्लॉक नहीं करते एट ऑल दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. ठीक है, ये मटेरियल्स अपने थ्रू लाइट को स्ट्रेट लाइन में पास होने देते हैं एंड इसीलिए आप इनके थ्रू इनके इधर साइड, दोनों साइड, you can see on both the sides through these objects very clearly. Okay, so the examples of some transparent materials we have is clear glass, clear water, air, etc. All of these are transparent materials. We can see through these objects very clearly. Secondly, materials that block light partially. अब वो materials जो light को partially block करते हैं they are called translucent materials. Example paper, colored glass, oil, etc. And the materials जो लाइट को completely block कर देते हैं they are called opaque materials. For example book, pencil, table, etc. ठीक है, चलो. Now next we come to the topic that is shadow. See, anything that faces light casts a shadow behind itself. What actually is a shadow? What they're saying कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को फेस करेगा वो अपने पीछे की तरफ एक शेडो कास्ट करता है. But what is this shadow? See, a dark area, एक डार्क एरिया फॉर्म होता है जब एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल या ओपेक मटेरियल एक लाइट सोर्स के बीच में फ्रंट में आ जाता है. ठीक है, और वो डार्केंड एरिया को कहा जाता है शेडो. एक शेडो कब बनती है? जब लाइट ब्लॉक हो जाती है. एंड एक शेडो के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास लाइट सोर्स, एक ऑब्स्टेकल एंड एक सरफेस होना जरूरी है जहां पे शेडो फॉर्म होगी. ओपेक ऑब्जेक्ट्स आपकी डार्क शेडोज बनाते हैं. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स आपकी फेंट शेडोज बनाते हैं एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा फेंट या इवन कभी कभी शेडोज नहीं भी बनाते. ठीक है, सो जहां भी लाइट होगी व्हेन देयर इज लाइट देयर विल बी अ शेडो. सम रूल्स. अब शेडो फॉर्मेशन के लिए क्या रूल्स है? नंबर 1 कि शेडो हमेशा लाइट सोर्स के ऑपोजिट साइड बनती है. सेकेंडली, फॉर व्हाइट लाइट के लिए शेडो हमेशा ब्लैक कलर में बनेगी. शेडो जो बनती है वो जस्ट एक उस ऑब्स्टेकल का आउटलाइन होती है. कलर शेडो कब बनती है? जब 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा कलर्ड लाइट एक ऑब्स्टेकल के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन से फॉल करेंगी तब वहां पे कलर्ड शेडो बनेगी. देन इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट को आप लाइट सोर्स के क्लोज लाओगे तो शेडो आपकी बड़ी हो जाएगी. और एक ऑब्जेक्ट को अगर लाइट सोर्स से दूर ले जाया जाता है तो शेडो छोटी हो जाती है. द शेडो गेट्स स्मॉलर. Last, the size of a shadow depends on the. अब एक शेडो का जो साइज है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है? नंबर 1 डिस्टेंस, सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्स्टेकल के बीच का डिस्टेंस कितना है. सेकेंडली, ऑब्स्टेकल एंड उस सरफेस पे, जिस सरफेस पे शेडो फॉल कर रही है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है. ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर शेडो का साइज डिपेंडेंट है. थ्रू अ डे, एक डे में जो शेडो का साइज है वो चेंज होता रहता है. ठीक है, सन सबसे लॉन्गेस्ट शेडो बनाता है डे के बिगिनिंग एंड एंडिंग में. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइम पे सन स्काई में लोवेस्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है. एंड मिड डे के दौरान शॉर्टेस्ट शेडोज बनती हैं बिकॉज इस टाइम पे सन हाईएस्ट इन द स्काई होता है. ठीक है, चलो, दैट्स कंप्लीटेड. नाउ लेट्स come to the exercises.
First of all, darken the correct options in the OMR sheet. Number 1, an example of an opaque object. Opaque object example यहाँ पे क्या है student? That is what? Wait, it should not be opaque object, it should be transparent object. Yeah. So cut it and write over here transparent object. Because among these 3 are the opaque objects, only one is the odd one out, that is transparent. So option will be option A correct. Secondly, example of a luminous body. Luminous body का example है candle. Option A. Example of non-luminous body, that is what? This is tree. Option A again. Then shadow of an object smaller in size. ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो शेडो का साइज है वो स्मॉलेस्ट होता है ड्यूरिंग द आफ्टरनून. ऑप्शन बी. अ लिविंग थिंग कैन नॉट एमिट लाइट. ठीक है, एक लिविंग थिंग जो है जो लाइट एमिट नहीं कर सकती इनमें से, दैट इज व्हाट? टर्माइट. ऑप्शन सी. चलो नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? फिल इन द ब्लैंक्स. Number 1, an object that has light of its own. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, that is called luminous object. Secondly, an object that does not have, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, that is called non-luminous object. Some living things in nature can emit light, which is called bioluminescence. Yes, कुछ living things nature में भी लाइट एमिट कर सकते हैं, उसे कहा जाता है bioluminescence. Then dash is a dark outline. एक dark outline जो तब बनती है जब लाइट एक ऑब्स्टेकल को फेस करता है, that is called shadow. The color of the shadow formed by a white light. ठीक है, एक white light के थ्रू जो शेडो बनती है उसका कलर हमेशा कैसा होता है? ब्लैक और डार्क. Then we come to true and false. Number 1, objects that emit at their own light. ऐसे ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, they are called luminous objects. True. And objects जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं है, they are called again luminous object. False. They are called non-luminous object. When there is light, there will be a shadow. Yes, true. Shadow is formed when light faces an obstacle. Yes, true. And size of the shadow. एक shadow का जो size है वो light source की position के ऊपर dependent है. So yes. ठीक है? No, or not on the position of light source. It is dependent on the distance between the light source and the obstacle. Alright, so this is false. Next we come to answer the following question. And the first question we have is that how are luminous and non-luminous objects different from each other? So luminous objects are the objects which emit their own light. They produce their own light. For example, we have sun, stars, candle, tube light, etc. But non-luminous objects are the objects which do not emit their own light. Okay, they reflect the light of any other object which hits them. Right? Like tree, book, chair, table, etc. Moon. Secondly, depending on how they block light, what are the different categories of materials? Describe with the help of examples. Okay, what are the different categories? So, we have discussed, we have 3 different categories of materials on the basis of how they block the light. Number 1, we have transparent objects. Second, we have translucent. And third, we have opaque. Transparent objects are the objects which do not block the light. They allow the light to completely pass through them. Okay? Translucent are the objects which partially block the path of light. And opaque objects are the objects which completely block the path of light to pass through them. Secondly, define shadow. What are the features of a shadow? Okay? Shadow kya hai and shadow ke features kya hai? So you will write anything that faces the light casts a shadow behind itself. But you will write from here. Not from here. You will write from here that a dark area is formed in a translucent material or an opaque material comes in front of a source of light, and this darkened area is called a shadow. Alright. Then they have asked you what are the features of a shadow. So we could write that a shadow is always formed on the opposite side of the light source. For the white light, the shadow is always black in color. The shadow form is just the outline of the obstacle. Okay. So these 4 to 6 points you will write in your answer.
Next question we come to that what factors does the size of a shadow depends? Elaborate on the varying size of a shadow through a day. ओके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एक शेडो का साइज डिपेंडेंट है एंड आपको elaborate करना है शेडो के वेरिंग साइज को थ्रू अ डे. So this we have discussed. These are the factors. Distance between the source of light and the obstacle, and the distance between the obstacle and the surface on which the shadow falls. These are the two factors जिसके ऊपर एक shadow का size dependent होता है. And during the daytime, you will describe from here that through a day the size of the shadow keeps changing. The sun casts the longest shadow at the beginning and end of the day because sun उस time पे lowest होता है. And shortest shadows cast होती है midday पर because तब sun highest होता है. So this whole paragraph is your answer for this question. Question number 4. ठीक है. Last question, what is bioluminescence? Give example. So this we have discussed कि कुछ living beings हैं जो अपनी खुद की light produce कर पाते हैं and उसको कहा जाता है bioluminescence. Okay, from here you will write that there are some living things that can emit their own light and the production of light by living things is called bioluminescence. For example, lanternfish, fireflies, glowworm, etc. This is the answer for this question number 5. Okay. The chapter is completed and I hope you must have understood it. Let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself, keep learning very well, and thanks to all.